फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A एंड वो इट इज 7 मार्क्स। तो क्या है ये क्वेश्चन? द असेसिंग ऑफिसर AO ऑफ धीरज प्राइवेट लिमिटेड passed an assessment order under section 143(3) on 7th July 23 in respect of assessment year 22-23, where he disallowed certain expenses to the extent of rupees 5 lakh. However, he enhanced depreciation claim in respect of one of the assets. Dheeraj Private Limited filed an appeal with the Commissioner of Income Tax Appeals against the disallowance of expenses. Now, the Commissioner of Income Tax wants to revise the order under section 263 to withdraw allowance of enhanced depreciation made by the assessing officer. Now, the question is, can the Commissioner of Income Tax exercise his revisionary power under section 263? Will your answer change if the Commissioner of Income Tax Appeals has rejected the appeal without passing the order? So your answer should explain the relevant provisions of the Income Tax Act, right? एंड ये क्वेश्चन का वेटेज है 7 मार्क का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। तो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में हम आंसर राइटिंग करेंगे, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लेट्स राइट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5A। ये है दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का फॉर DT एंड IT, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 5A अंडर सिलेबस 2022। राइट, तो क्वेश्चन इज कैन CIT means Commissioner of Income Tax, can CIT revise the order under section 263? Can CIT revise the order under section 263? तो ये है क्वेश्चन। तो पहले हम समझते हैं कि ये सेक्शन 263 होता क्या है। सेक्शन 263 होता क्या है? See, the principal Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax can revise an order passed by the assessing officer if condition 1 अगर order is erroneous, condition number 2 it is prejudicial to the interest of the revenue. Prejudicial to the interest of the revenue means results in tax loss to the government. अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से अगर गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो इन दैट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन रिवाइज द ऑर्डर व्हिच इज ऑलरेडी पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। ये दो कंडीशंस सैटिस्फाई होना चाहिए। बट इफ द ऑर्डर इज ऑलरेडी अंडर अपील, जो अगर ऑर्डर ऑलरेडी अपील के अंदर है, then Commissioner of Income Tax cannot revise the parts that are being reviewed in the appeal, right? So and but एक कंडीशन ये भी है, अगर आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर का केस है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर केस मीन्स द CIT can revise the part of the order that are not covered in the appeal. Simply, Commissioner of Income Tax can revise the part of the order which is not covered in the appeal. Right. So let's write
the principal commissioner of income tax or commissioner of income tax can revise an order passed by the assessing officer if condition number 1 अगर the order is erroneous and it is prejudicial to the interest of the revenue. It is prejudicial to the interest of the revenue. Means that is results in tax loss to the government. Results in tax loss to the government. बट इसमें कुछ कंडीशन है. However, if the order is already under appeal, then the Commissioner of Income Tax cannot revise the parts that are being reviewed in the appeal. Right. But और एक कंडीशन है, but under the doctrine of partial merger, the CIT can revise the parts of the order that are not covered in the appeal. Okay, ये है बेसिक कंडीशन टू क्लेम under section 263 by Principal Commissioner of Income Tax, right? So in this case, see, assessing officer का जो ऑर्डर है, असेसमेंट ऑर्डर, वो है 7 जुलाई 2023 को फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, राइट. एंड जो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हुआ है वो है 5 लाख व्हिच इज अपील्ड बाय द असेसिंग. एंड एनहेंस डेप्रिसिएशन जो है व्हिच इज नॉट अपील्ड बाय द असेसी, वो है एनहेंस डेप्रिसिएशन जो है वो असेसी ने अपील नहीं किया है, राइट. तो यहाँ पर जो CIT का इंटेंशन है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का जो इंटेंशन है, वो wants to revise the assessing order only for enhanced depreciation but not for the expenses disallowed,
जो CIT जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के इंटेंशन के हिसाब से दे वांट टू रिवाइज द असेसमेंट ऑर्डर्स ओनली फॉर एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन के केस में, बट नॉट फॉर द एक्सपेंसेस व्हिच इज ऑलरेडी डिसअलाउड, राइट। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर के हिसाब से सिंस द डिसअलाउड एक्सपेंसेस आर अंडर अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन नॉट रिवाइज दैट पार्ट। जो डिसअलाउंस एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी ऑर्डर अपील के अंदर है, तो अगर ऑर्डर के अपील के अंदर अगर है तो इन दैट केस CIT कैन नॉट रिवाइज दैट पार्ट, राइट। हाउएवर सिंस एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट अंडर द अपील, CIT कैन रिवाइज दैट पार्ट अंडर सेक्शन 263। यहाँ पर जो एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन है वो अपील के अंदर नहीं है, तो ये enhanced depreciation के केस में CIT can revise that part under section 263. Okay. If Commissioner of Income Tax appeals rejected the appeal without passing an order, then if the order is cancelled without an order, then it means no part of the assessing officer's order is actually under appeal. But since the assessee only appealed for the disallowed expenses and not depreciation, since the assessee only appealed for the disallowed expenses and not depreciation, in that case, Commissioner of Income Tax can still revise the order for depreciation. Okay, तो CIT इस केस में एक्सरसाइज कर सकते हैं रिविजनरी पावर अंडर सेक्शन 263 टू विड्रॉ द एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन। वो इसलिए सिंस इट वाज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अपील। इवन इफ द अपील इज कैंसल्ड विदाउट एन ऑर्डर, स्टिल CIT कैन रिवाइज द ऑर्डर रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो यही हमको लिखना है कि assessing in this case, assessing ऑफिसर का जो ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर है वो आया था कब? 7th 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 22 and 23, राइट। और जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो कितना है? वो है 5 लाख which is appealed by the assessee। जो अलाउड जो एक्सपेंसेस को assessee ने अपील किया है, राइट। एंड एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन के केस में क्या होगा? ये जो एनहेंस्ड डेप्रिसिएशन है इसको एसएससी ने अपील नहीं किया है, नॉट अपील्ड बाय द एसएससी। एसएससी ने अपील नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर CIT जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT का इंटेंशन क्या है? CIT का इंटेंशन है wants to revise the assessing officer's order, AO order, only for enhanced depreciation but not for the expenses which is disallowed, right। So हमको पता है
डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर के केस में you can write that since the disallowed expenses are under appeal, so Commissioner of Income Tax cannot revise that part. However, since enhanced depreciation is not under appeal, so in that case CIT can revise that part under section 263. ये है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, राइट. सो एंड इफ CIT appeals, if Commissioner of Income Tax appeals कैंसिल कर देते हैं अपील, without passing an order, then in that case क्या होगा? If you can write, if the appeal is dismissed, without an order, it means no part of the assessing officer's order is actually under appeal. ये है फर्स्ट पॉइंट. बट सिंस द assessee only appealed for the disallowed expenses and not depreciation, in that case Commissioner of Income Tax can still revise the order for depreciation. You can write that, but since the assessee only appealed for the disallowed expenses and not depreciation, in that case CIT can still revise the order for depreciation, राइट. तो ऐसे पूरे अच्छे से लिखना है क्लैरिटी के साथ. एंड
the answer remains unchanged even if the appeal is cancelled without an order. Right. In conclusion, you can write that the answer remains unchanged even if the appeal is cancelled, disposed of or cancelled without an order. Right. So yes, Commissioner of Income Tax can exercise his revisionary power under Section 263 to withdraw the enhanced depreciation since it was not the subject of appeal. Even if the appeal is cancelled without an order, CIT can still revise the order related to depreciation. Right. तो इतना ही आपको लिखना है ऐसे ही क्लैरिटी के साथ, सो दैट यू विल एबल टू सिक्योर फुल टू फुल 7 मार्क्स. राइट. केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है. आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर सकते हो. राइट. तो इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 5B भी सॉल्व करना है. सो दिस इज इट all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.